Good morning to all. I, Dr. Meenakshi Vasnik, on behalf of MANOHARRAO KAMDI MAHAVIDYALAYA MAHAL, do welcome you all in today's orientation program on the much updated issues of academic discourse called PAC, that is the Provisional Accreditation of the Colleges. As we are already acquainted that the vision of NAC is to make quality the defining element of higher education in India through a combination of self and external quality evaluation, promotion, and sustenance initiative. To encourage more and more institutions to come forward for NAC process and to overcome the concern of accreditation, the national agency, which is the statutory body of University Grants Commission, UGC, has offered to grant that is called PAC, that is Provisional Accreditation to colleges that have not secured accreditation from it so far for some reasons. PAC will certainly help to ascertain the readiness of such institutions for the final NAC accreditation. Today's orientation program is organized in order to address these concerns that would facilitate to such institutions who could apply for the PAC process and get acquainted regarding the areas they need to work on to reach the threshold level of quality under the matrix of NAC. To guide and enlighten us on this very crucial topic, today we are indeed privileged to have amongst us a very prodigious personality in academic fraternity, respected Dr. USHA Sakure Madam. Madam's academic and administrative achievements are spellbound and very immense in the list of her introduction. However, I would take this prestigious opportunity to introduce to you Dr. USHA Sakure Madam in few words. Madam is a professor, head Department of English and officiating principal at MANOHARRAO KAMDI MAHAVIDYALAYA MAHAL with 31 years of teaching experience. She has participated in various regional, national, and international seminars and has to her credit more than 34 research papers in national and international journals and 10 chapters in edited books. Madam is associated with various organizations and worked in different committees of Nagpur University and is in the interview board of Navodaya schools. She is the ex-director of Dharampet Mahila Multi-State Cooperative Bank and Devyani International School. Madam holds the key post of secretary at the Central India Institute of Education and Cultural Development, a pioneer body imparting the quality education in the field of rural education in Central India. She has her own institutes of HCL, Career Development Center, and Indiana College of Animation and Editing. She is the secretary of Center for Literary Interaction and Creativity and Shakespearean Society of Central India. Madam is in the advisory board of Green Heaven Group of Institution and holds the key position of advisor of management in Devta Life Foundation NGO Nagpur. She is also the co-editor of Young Junction monthly career magazine and biannual Click journal. Insight, a trained Kathak dancer. She is also a trained Kathak dancer, has an edge on creative art. Madam is a poetess with more than 30 poems to her credit and a creative writer. As a creative writer, she has published various articles in the local newspaper with several publications on travel and reviewed several books on various genres. She has received the prestigious Bharat Jyoti Award for her outstanding contribution in the field of education by Honorable ex-Governor of Karnataka, Shri Bhishma Narayan Singh in New Delhi. Madam is the recipient of the prestigious Savitribai Phule Award from ex-Vice Chancellor Amravati University, Honorable Dr. Kamal Singh, for excellence in educational field and social upliftment, and also received Vidarbha Bhushan Award from Yashwant Bharati Lok Kalyan Sansthan, Nagpur. May I now request Dr. USHA Sakure Madam to enlighten our enthusiastic participants with your expertise guidance. Over to Sakure Ma'am. Thanks, Vasnik Madam, for your generous introduction.
And good morning and a warm welcome to all the participants of various colleges who have joined this online webinar today. As we all know, today's webinar is being arranged to know more about PAC, which is a recent venture of NAC to facilitate the accreditation process nationally so as more and more colleges get accredited in the coming years. We all are aware that NAC, with its mission and vision, wants that every higher institute should possess the required parameters to make well rounded, responsible personalities of the students with holistic development and provide basic skills and knowledge in accordance with NEP 2020. Just now, let me share my screen for the presentation. Is it visible? Yes, ma'am, it is. Clearly visible, ma'am. Okay, thank you so much. So we can say this is a provisional accreditation for colleges, that means PAC. This has been a recent venture of NAC, and NAC has introduced it recently so that more colleges could come ahead, come forward, and go for accreditations. So NAC, we already know NAC is mandatory to all the HAs, and still the data that is found is very unsatisfactory. The fact that only few colleges, few universities, and standalone institutions possess NAC grading. Among the states, Maharashtra accounts for the highest number of accredited colleges. It is about 1,796 colleges that has been accredited by NAC. Just let me see. Right. Now you can see Karnataka is second highest with about 864 NAC accreditations. So we can say that these accreditations which remain valid for about 5 years, and there are only 12 universities and say about 64 colleges which have been reviewed by NAC 4 times with a gap of 5 years between each grading. At present, NAC accreditates a maximum of 2,000 institutions annually. Still, there are n number of institutes due to various reasons are not accredited, which presents a sorry picture. Now, with this in view, NAC has come forward to help or transform the HEIs. Likewise, has simplified the process so that more and more colleges come forward to get accredited. NAC has found that there are many colleges which are hesitant to accredit due to various apprehensions and fear that they may not reach the required standard and would thus not fit into the calculated system. There are many reasons, not only one, there are many reasons why the institute shun themselves from being accredited. The chief among them is the fear of obtaining poor grade. So everyone feels that maybe they are going to get very poor grade due to poor facilities and maybe substandard quality of education that holds back the institutes from voluntarily applying for NAC. And secondly, if the institute is not accredited, the management can claim that the institute is not accredited, that they are in the process of applying, but a poor grading would certainly affect the admissions. Sometimes the smaller institutes are not able to follow the complicated DV process and find themselves in a maze, finding it difficult to cross all the hurdles. So these are the reasons why everyone fears for NAC. And to overcome this kind of hesitancy, recently NAC has taken a reformative step to introduce PAC. This is a substitute for normal NAC, which is miniature version of regular NAC accreditations. Until now, only those higher institutes that were already 6 years old or from where at least 2 batches of students have graduated could apply for NAC. But now, under the new set of guidelines provided by NAC, colleges and universities that have completed even 1 year, mind you, if they have completed 1 year
in that case, or a batch of students have passed, will be eligible to apply for PAC. According to the guidelines, this move aims to widen the horizon of accreditation. Now, any institute which has completed 1 year, or any institute which has completed some cycles but could not continue with other cycles, is also eligible to apply for PAC and get its accreditation. So in this case, अगर ऐसा होता है कि कोई सा इंस्टीट्यूट जो है जिसने एक साइकिल पहले कर लिया है, दैट मीन्स अगर वो 2004 में उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद उसका कोई सा भी एक्रेडिटेशन नहीं हुआ, 2008, 10 कुछ भी नहीं हुआ है, एंड नाउ इफ दे वांट टू अप्लाई फॉर पैक, PAC, provisional accreditation for colleges, even in that case, they are eligible to apply for PAC. So this is the best thing, the best point that can be taken, that first of all, any new college which has completed 1 year can apply for PAC, as well as the institute which has just lost its validity due to some reasons can also apply for PAC. So this is the best part of provisional accreditation for colleges. Step by step, we are going to analyze how PAC is going to be effective, how small colleges would be able to, be beneficial, how PAC will be beneficial to them. That we'll see step by step. So this process is highly simplified now, and this has been carefully chosen to reflect the ground reality of the colleges across the country. Because NAC has already seen, NAC ने already देख लिया है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो NAC के डर कर के कारण वे एफिलिएशन को या फिर इस एक्रेडिटेशन को के पीछे हट रहे हैं. They are not following the NAC accreditation process because they find it is very complicated. So this will become a boon for such smaller colleges. And this way, about 10,000 colleges will come forward to get accredited to stand with others. And NAC has urged all these colleges to come forward and get accredited to improve upon to the expectations of 2020. So NAC is going to offer PAC to about 20,000 colleges, including standalone institutions in a single year, and they have already it would go up to 40,000. The main intention behind this is to mainstream the institution through PAC. That means which are not eligible to apply for accreditation under the present NAC norms can also be benefited with it. So PAC is nothing else but it is a preparatory process for main accreditation for these institutions. Of so many institutions which are accredited around the entire nation, some 12,000 are nearly confident of getting accreditation, but the rest of them are very hesitant, or they fear that they would have not collected the data properly. And if they fulfill the basic requirements, the provisional accreditation will help them to get a proper accreditation. So everyone should, as such, ऐसे colleges जो इस NAC को नहीं फेस कर पाए हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत ही बेहतर साबित होगा, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा चांस जिसमें वो अपने कॉलेजेस को एक्रेडिट कर सकते हैं. एक के बाद एक मैं आपको इन स्टेप्स के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स, जैसे NAC को अगर आप NAC के वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो उसकी वेबसाइट को देखकर ही डर जाते हैं. कई बार छोटे कॉलेज में जो है डीवीवी प्रोसेस है, इतने सारे क्राइटेरियाज हैं, इन सबको कैसे क्या हम फुलफिल कर पाएंगे. और कुछ कॉलेजेस बिल्कुल नए हैं तो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल बात होती है. बहुत सारे कॉलेजेस के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास उनका टीचिंग स्टाफ पूरा नहीं है, तो भी वो डरते हैं कि हम NAC को कैसे फेस कर पाएंगे. लेकिन पैक जो है इसमें सिर्फ बेसिक आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. You only have to follow 3 steps. That means there are 20 information about the institutes. That means 10 will be qualitative and 10 will be quantitative questions. And the peer team will validate. Peer team भी
हो सकता है आएगी, हो सकता है कि इट विल नॉट कम, बिकॉज वो उनका ये भी प्रावधान है कि वो ऑनलाइन पीयर टीम का विजिट रहेगा और उसमें आपको सारी चीजें आपकी जितनी भी है वो आप उसमें दिखा सकते हैं। तो जैसे अंडर दिस न्यू गाइडलाइंस, institutions that apply for PAC will be examined based on quality and quantitative questions that the applicant qualifies. कि यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ एक साल, मतलब पहले तो क्राइटेरिया था कि दे हैड टू बी अबाउट 6 years old, मतलब कोई कॉलेज 6 years old हो चुका है और उसमें एटलीस्ट 2 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो चुके हैं, ओनली दे कुड हैव अप्लाइड फॉर नैक। बट इन द प्रेजेंट पैक और द प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेजेस यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है, उसमें ये जो नया गाइडलाइंस है उसमें 1 year का भी, 1 year, एनी कॉलेज विच इज 1 year old can also be eligible to apply for this provisional accreditations. Or any college offering regular program of higher education of or undergraduate and above is eligible to apply. This is the criteria. और 1 academic year from student admission to announcement of result. ऐसा नहीं कि एक ही साल का कॉलेज है और उसको प्रोविजनल एक्रेडिटेशन के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। इट हैज टू शो कि उसने एटलीस्ट स्टूडेंट का एडमिशन या अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट जो है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ऐसे ही कॉलेजेस को ये वैलिड हो पाएगा। द वैलिडिटी पीरियड विल बी ऑफ 2 years। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी है वो ये रहेगी कि आपका जो वैलिडिटी पीरियड है वो 2 years का रहेगा। इट विल बी फॉर 2 years। दैट मीन्स नैक का जब एक्रेडिटेशन होता है तो आप देखते हैं उसमें कि उनका वैलिडिटी पीरियड 4 years का रहता है, तो आफ्टर 5 years जो है वो नैक फिर से आती है। लेकिन यहाँ पर पीएसी के दौरान आपकी जो वैलिडिटी है दैट विल बी ओनली फॉर 2 years। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, वट एवर सर्टिफिकेट दैट यू रिसीव विल बी फॉर वैलिड फॉर 2 years। एंड कॉलेजेस कैन नॉट opt for 2 consecutive years। वो लोग 2 consecutive years के लिए नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स 1 साल आपने पीएससी के लिए अप्लाई किया, उसके बाद आपको 2 साल का एक्रेडिटेशन मिल गया, उसके बाद में आप एक ही बार और फिर से पीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे नैक में आप एक के बाद एक, जैसे जैसे आपकी वैलिडिटी खत्म होती है और आप नैक के लिए अप्लाई करते जाते हैं, वैसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 टर्म दिए जाएंगे। सिर्फ 2 टर्म के बाद आपको आपका जो पीरियड है वो लैप्स हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से तिबारा आप तीसरी बार पीएससी के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है दैट इज इट विल नॉट हैव एनी साइकिल्स ऑफ एक्रेडिटेशन। इसमें जैसे आप नैक करते हैं तो उसमें एक के बाद एक साइकिल होते हैं। जैसे 2004 में आपने किया, उसके बाद में 2008 में आ रहा है, तो ऐसे एक के बाद फिर आप सेकंड साइकिल में जाते हैं, आप थर्ड साइकिल में जाते हैं, आप 4th साइकिल में जाते हैं। लेकिन पीएससी के दौरान देयर विल बी नो सच साइकिल्स। सो देयर विल बी नो सच साइकिल्स और ऑफ एक्रेडिटेशन। The most important thing that you should note here is the accreditation fees will be only 10,000 rupees. The most important, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो रही है कि कोई सा भी कॉलेज ये इस accreditation के लिए आ सकता है, because the fees here that has been mentioned is only 10,000 plus GST plus the actual logistic fee. If the peer team is visit is compulsory, अगर peer team आपका कॉलेज विजिट करना चाहती है, आपके इंस्टीट्यूट को विजिट करना चाहती है, तो इन दैट केस यू विल नीड सम एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक फी आपको लगेगी। बाकी द फी इज मिनिमल एंड इवन स्मॉलर कॉलेजेस कैन गो फॉर इट। The outcome is binary in nation. That means it is there will be only 2 things, that you are accredited or you are not accredited at all. Whatever you will get the certificate, if you comply with all the qualifications that they have put forward, you will get accredited. And if you do not comply with their norms, then you will not be accredited. So there will be only 2 things that can be given.
The colleges which are not accredited can apply again after a period of 6 months. So if you are not accredited, if your institute does fail to get accreditation, provisional accreditation, then you can apply again after a period of 6 months. But it should be within 1 year with the fees plus logistic, GST, everything you have to pay again. सो एक बार आपने 10,000 पे कर दिया और आपको प्रोविजनल एक्रीडेशन अगर नहीं मिल पाता है तो आपको 6 मंथ के दौरान ही और 1 साल के पहले ही आपको फिर से एक एक्रीडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको वो फीस भी पे करनी पड़ेगी और जीएसटी और लॉजिस्टिक पीआरटी का अगर देना है वो भी आपको देना पड़ेगा. Another important thing is that you also have to follow the public disclosure policy. That means whatever policy, whatever documents that you are uploading, आप कोई से भी documents जो upload कर रहे हैं वो सारे के सारे बाकी लोग देख सकते हैं. You cannot hide it. Everything will be visible. Anyone can find it on your website. Anyone can read it. There should be no changes or modification in documents once it is submitted. Very important fact that once you have submitted, you cannot access it, you cannot change or modify your documents. And all the claims, benefits which are applicable. That means if you get a PAC, if your college or institute gets provisional accreditation, रूसा के grants है, बाकी जितने भी claims जो है, जो government की जो schemes है, वो सब आपके ऊपर वैसी ही लागू होती है जैसे आपके NAC accreditation में लागू होती है. सिर्फ उतना ही एक फर्क रहेगा कि फॉर एग्जांपल A grade colleges को अलग कुछ सहूलियत मिलती है, B grade college को अलग कुछ सहूलियत मिलती है. That will not be applicable to you. बाकी जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, बाकी जितनी भी चीजें हैं, वो सारे जो NAC एक्रेडिटेशन के साथ लागू है वो आपको यहाँ पर मिल पाएंगी. यहाँ पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल भी है जो आप उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपत्ति है तो आप वहाँ पर अपना कंप्लेन या शिकायत आप वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं. और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको इसमें पूरे मार्क्स जो 40 का स्कोर रहेगा, फुल स्कोर विल बी 40. Out of this 40, you should at least try to attain 15 marks. If you get 15 marks out of 40, you are eligible to get provisional accreditation. So this is such a great thing about it. NAC will certainly issue an evaluative report or a certificate that your college is provisionally accredited. But mind you, this accreditation is provisional accreditation which lasts only for 2 years, and after 2 years you have to again apply for PAC if you are not going to follow NAC norms. If you are still not shunning yourself to attain or attend NAC, you can take 2 terms. That means 2 बार आप PAC को अपने इसमें लागू कर सकते हैं. और इसका जो पूरा प्रोफार्मा है that is going to be online. It has still not yet come, and after maybe in a period of about 15 to 20 days, PAC application will be online. It will be on the NAC portal where you can ask. That is why we have arranged this seminar so that more and more people would come forward and they would try to get at least provisional accreditation of their institutes, and that is why we have arranged this webinar for general awareness. So the first thing that you have to I would like to mention is that they will be asking you some basic institutional questions. There are some basic institution questions. That means the name of the institution would be there. इसमें कोई भी आपको मार्क्स नहीं रहेगा. देखो फर्स्ट प्रोफार्मा जो आप ओपन करोगे ऑनलाइन, दैट विल बी द इंस्टीट्यूशनल बेसिक इंफॉर्मेशन, सम बेसिक इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू अपलोड ऑन द online proforma, and that will be there. You only have to take, and sometimes you also have to upload the certificates. So the first thing is that it will be AISHE ID. Every institute has AISHE ID that you have to upload the certificate. Second, you have to give your institution name, and then third, the date of establishment of the college. So आपका जो कॉलेज है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है वो आपको वहाँ की
डेट लिखनी है और वहाँ का ईयर लिखना है। यू ऑल्सो हैव टू, फोर्थ नंबर पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, द इंस्टीट्यूशन हैज इट्स ओन बिल्डिंग, तो यू हैव टू रिप्लाई इफ यू हैव यस और नो। तो यस है तो आप यस लिखेंगे, आपकी अपनी खुद की बिल्डिंग है तो आप यस लिखेंगे, अगर आपकी खुद की बिल्डिंग नहीं है तो यू विल राइट नो। तो फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा कि आपकी इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट का आपको लिंक दिया जाएगा, आपको लिंक वहां पर देना है। फिर आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनकी जानकारी देने हैं, आपको आपके कॉलेज का नाम, एड्रेस, किस स्टेट में है, कौन से सिटी में है और उसका पिन कोड क्या है, फोन नंबर, आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपके प्रिंसिपल का फोन नंबर लगेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ये 6 नंबर पर ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। सेवेंथ में you also have to mention the name of the IQAC coordinator, the phone number of IQAC coordinator, mobile number and email ID. Or eighth, you have to give the location of the college, whether it is an urban college, it is a rural college, semi-urban college, ट्राइबल और हिली एरिया, तो दैट यू हैव टू मेंशन कि आपका कॉलेज अर्बन में है, रूरल में है, सेमी अर्बन में है, तो ये जानकारी आपको देनी है। और 9 नंबर पे आपको ये पूछा जाएगा कि आपके इंस्टीट्यूशन ने 1 एकेडमिक ईयर कंप्लीट किया है या नहीं। सो इफ योर इंस्टीट्यूशन हैज कंप्लीटेड 1 ईयर यू विल राइट यस, एंड इफ इट हैजंट देन यू विल राइट नो। तो यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द एकेडमिक ईयर। Then 10th category आएगी the type of the college. So which type of college you have? So by shift. If it is a day college, you have to mention it is a day college. If it is a night college, or if it is a evening college. By gender, if it is boys college, girls college, or if it is a co-education college. By management, if it is a private college, unaided college, or government college. So these details you have to furnish. ये सारी चीजें आपको बताना होगा कि आपका कॉलेज किस तरह का है, डे का है, नाइट का है, इवनिंग का है, बॉयज का है या गर्ल्स का है, कोएड है, इसमें आपका प्राइवेट है, एडेड है, एफिलिएटेड है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें 10 नंबर के पॉइंट में आपको डालनी होगी। फिर 11th नंबर है स्टेटस ऑफ द कॉलेज, जिसमें आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यू हैव टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट विच सेज वेदर इट इज एन एफिलिएटेड कॉलेज। इफ इट इज एन एफिलिएटेड कॉलेज यू हैव टू अपलोड द एफिलिएशन document, and if it is on autonomous college or if it is standalone institutions, you have to furnish all these details as per the record. Later on, when you come to the 12th point, in 12th point you have to mention the name of the jurisdiction of the college under the university, and that also you have to upload the document. Where 13th is state statutory regulatory authorities. If it is applicable, then you have to, because अपने तो सब affiliated colleges है तो इसमें ये अपन नहीं बैठते, so we don't have to put it into it. Then 15th नंबर पे आता है कि अगर आपका कॉलेज एक स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है तो ये किससे एफिलिएटेड है, AIU से है क्या, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड है क्या, इसकी डिग्री इक्विवेलेंस है क्या, अगर ऐसा है तो ये सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होंगे। 15 नंबर पर आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फैकल्टी विद डॉक्टरल डिग्रीज और इक्विवेलेंट, आपके इंस्टीट्यूट में कितने टीचर्स हैं और इन टीचर्स में कितने लोग ने PhD डिग्री और या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री उनके पास है, तो इसका आपको नंबर देना होगा। 16 नंबर में आपके कौन से नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आप ऑफर करते हैं, BA है, BCom है, BCA है, BBA है, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर डालनी रहेगी। 17 नंबर में आपको बताना होगा कि लिस्ट ऑफ मैंडेटरी कमिटीज, तो आपके कौन कौन से मैंडेटरी कमिटीज आपके कॉलेज में है या नहीं। जैसे आपने होते हैं स्टूडेंट काउंसिल होता है, कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल होता है, देयर इज ऑलवेज अ वुमेन सेल होता है, वुमेन डेवलपमेंट सेल होता है, स्टूडेंट ग्रीवांसेस सेल होता है, एंड एंटी सोशल हरासमेंट, एंटी सेक्सुअल हरासमेंट सेल होता है, एंटी रैगिंग सेल होता है, माइनॉरिटी सेल, कमिटी फॉर SC ST, ऐसे जो मैंडेटरी जितनी भी कमिटीज आपके कॉलेज में प्रेलेवेंट है, वर्किंग है, आपको उनका पूरा डिटेल देना होगा। 18 नंबर पे आएगा कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि नहीं, अगर आपके पास है तो यू विल राइट यस, इफ यू डोंट हैव देन यू विल से नो। सो 19 पे आएगा आपको क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आपके यहाँ पर, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम आपके यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं, तो इट इज ऑलरेडी देयर, तो यू कैन जस्ट से यस। एंड 20 एंड लास्ट नंबर पे है अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वहां पर आपको एक
NAC portal में you will get, when you open the PSC portal, you will get that there are some undertakings, and that prescribed format has to be fully uploaded on your college letterhead, and you have to upload it, which has been prescribed by NAC. So this way you have to furnish all the basic information about your institute, and you have to upload it in the prescribed format. As soon as you have filled the basic information, you will have to answer the quantitative and qualitative questions, which has 20 marks in each category. So I should again I repeat that these are the basic information about your institute. ये सिर्फ basic information है आपके institute के बारे में, आपके college के बारे में, जिसमें कोई भी marks नहीं है. तो PAC या प्रोविजनल एक्रीडेशन फॉर कॉलेजेस के लिए आपको ये फॉर्म पहले भरना होगा, जिसमें आप एक पूर्ण माहिती आपके कॉलेज के बारे में जितने भी डिटेल है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर डालने होंगे. और इसके बाद कम्स द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव क्वेश्चंस. तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस जो रहेंगे उसमें आपको 20 मार्क्स है, और क्वालिटेटिव क्वेश्चन जो है वो भी आपको 20 मार्क्स उसमें मिलेंगे. तो इसमें करीब करीब आपको 10 पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दिए रहेंगे, और इन 10 पैरामीटर्स के अनुसार आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो भरनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वांटिटेटिव metrics लिया है, I think this is very clear about the basic information that every college has to furnish to the provisional accreditation format. Okay, now we come to the quantitative questions. There are some quantitative questions that you have to furnish the details. इसमें भी numbers हैं. There are 10 questions and each question carries 2 marks. So you only have to tick the whichever is applicable to your institute. For example, first number पर आता है percentage of teachers against sanctioned required post for full-time teachers. कि आपके यहाँ पर जो sanctioned post है उसके against में आपके full-time teachers कितने हैं, और यहाँ पर आपको 3-point scale दिया गया है. 3-point scale में आपको आंका जाएगा, जिसमें पहले में आपको 0 मिलेगा, उसके बाद 1 मिलेगा, या फिर आपको 2 मिलेगा. या तो आपको 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या फिर 2 मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टीट्यूट. तो which says that if you have 10 less than 50, so if you get less than 50 score, you will get 0 mark. If you get between 50 to 75, you will get 1 mark. And if it is more than 75%, you will get 2 marks. I think this is very clear. The first question is the percentage of teachers against the sanctioned post. So if you have more than 75, you are eligible to get 2 marks. Second question comes, which says the student-teacher ratio. If the student-teacher ratio is more than 50:1, so that means you will get 0 marks. If it is between 30 to 50:1, you will get 1 mark. And if it is less than 30:1, you will get 2 marks. So you get 2 marks if your student-teacher ratio is 30:1. और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, डिसर्टेशन, स्किल बेस्ड लर्निंग. तो देखो नैक का जब हम रेगुलर नैक भरते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, बहुत सारी चीजों को आपको झेलना है. लेकिन यहाँ पर दे हैव मेड इट वेरी इजी, दे हैव मेड इट वेरी कन्वीनियंट. दैट मीन्स आप परसेंटेज ऑफ निकालेंगे और आपको सीधा सीधा मार्क्स मिलेगा. तो अगर आपके स्टूडेंट्स, आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, अगर 10 से कम है तो 0 मार्क्स मिलेगा, 10 से 20% है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और मोर देन 20 है तो वेरी इजीली यू गेट 2 मार्क्स. So these are the criteria that you have to take into consideration while you apply for PAC. एंड फोर्थ नंबर पे आता है पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. सो ये आपका आकलन इस बात पे भी करेंगे कि आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं. अगर पास परसेंटेज का अगर आप देखते हैं कि इफ इट इज लेस देन 40 तो यू गेट 0 मार्क्स. If it is between 40 to 50, you will get 1 mark.
and if it is more than 50 you again get 2 marks. So अगर आपका पास परसेंटेज 50 के ऊपर है तो वेरी इजीली यू गेट 2 मार्क्स। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स जो है खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आप प्रोविजनल एक्रेडिटेशन के पात्र हो पाएंगे या नहीं। 5वें नंबर पे है कि आपकी जो फैकल्टीज हैं उन्होंने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, उनकी खुद की बुक्स हैं क्या, उन्होंने चैप्टर्स लिखे हैं क्या बुक्स में, इफ दे हैव अटेंडेड कॉन्फ्रेंसेस और कॉन्फ्रेंसेस प्रोसीडिंग्स, they also have got their patents published. If all these things are there, if it is less than 5 again you get 0 mark. अगर वो 5 और 10 के बीच में है आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर 10 से ज्यादा है तो again you get 10 marks, 2 marks, sorry. So these are the criteria that you can follow. On 6th they have given, these are the criteria that every institute should possess. So they have made it so easier. Now on 6th point, the 6th point is student कंप्यूटर रेशो। अगर आपका स्टूडेंट कंप्यूटर रेशो है, मतलब हर स्टूडेंट के पीछे आपने कितना कंप्यूटर अपने कॉलेज में प्रोवाइड किया है। अगर इफ इट इज मोर देन 50 to 1 यू गेट 0। अगर 50 बच्चों के ऊपर एक है तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन इफ इट इज बिटवीन 30 to 50 तो यू विल गेट 1 मार्क, और अगर कम से कम 30 बच्चे के बैच में आपके पास लेस देन 30 से एक में है तो आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स मिलेगा। तो इन दिस केस ऑल्सो यू कैन जस्ट imagine, you can just have the true figure that you can get or your institute can get. Then when we come to the 7th point, the 7th point is percentage of classrooms and seminar halls with ICT facilities. So every institute should have ICT facilitated classrooms and seminar halls. If it is less than 10%, you get 0 marks. If it is between 10 to 20, you get 1 mark. And if it is more than 20, that means आपका बहुत ही अच्छे से सुसज्जित है, आपके पास परसेंटेज आपका जो है वो हॉल्स और आईसीटी फैसिलिटी वाले क्लासरूम्स है मोर देन 20% आ रहा है तो सीधे सीधे आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। 8th क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट कनेक्शन। अगर इफ यू हैव वाईफाई फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन, इफ इट इज लेस देन 10 Mbps तो you get no marks. If it is 10 Mbps to 20 Mbps you get 1 mark, and if it is more than 20 Mbps then you get 2 marks. So बहुत सारे इंस्टीट्यूट अगर आपको ये पैक करना है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, यू कैन ऑलवेज कंप्लाई। आपकी मैनेजमेंट को आप बोलकर या फिर कुछ ऐसे मेजर्स लेकर आप ये छोटी छोटी चीजों को अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं जिससे आपको सीधे सीधे मार्क्स मिल पाए। नेक्स्ट इज 9th क्राइटेरिया जो है वो है कि आप आपका जो कॉलेज है वो कौन कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज ले रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ले रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आपके कॉलेज में है या नहीं। अगर वो 5% से कम है तो आपका वहां पर कोई चांस नहीं है, बिकॉज यू विल गेट 0 मार्क्स। इसलिए आपको ये सारी एक्टिविटीज बढ़ानी है, एंड दैट शुड बी इफ इट इज बिटवीन 5 to 10 अगर आपके कॉलेज में प्रोग्राम्स हो रहे हैं तो आपको सीधे सीधे 1 मार्क मिलेगा। अगर आपके पास 10 से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम्स का आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, तो आपको सीधे सीधे 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है 10th नंबर, जिसमें है नंबर ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आपके कॉलेज में कितने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग्स होती है या नहीं, कुछ ओरिएंटेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं क्या। अगर 1 से कम है तो आपको फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, 0। एंड अगर 1 से 3 के बीच में है तो आपको 1 मार्क जरूर मिल जाएगा। और अगर आपने 4 से ज्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स कुछ आपने लिए हैं तो आपको 2 पॉइंट्स बिल्कुल करीब करीब मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि these were all the quantitative questions। ये सारे क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस थे जो आपको 0, 1 और 2 दिला सकता है। ये चीजें अगर आपके पास है तो आपको पूरे के पूरे ये जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा, एटलीस्ट आप 1 से 2 के बीच में आपको आराम से आसानी से आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट इतने मार्क्स दिला सकता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस है, ये कितने क्वेश्चंस है? दे आर 10 क्वेश्चंस, और हर
क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। दैट मीन्स ये जो 10 क्वेश्चन है पूरे मिलाकर आपको 20 मार्क्स यहाँ पर दिला सकते हैं, अगर आपने हर क्वेश्चन को में आपने अगर 2 मार्क्स लिया हो। नेक्स्ट आपका आता है क्वालिटेटिव क्वेश्चंस। सो मैंने आपको पहले बता दिया है कि तीन पैरामीटर्स पीएसी या प्रोविजनल एक्रेडिटेशन आपसे मांगता है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपकी अपने कॉलेज को देनी है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अगर आपने पूरा पुटअप कर लिया लेकिन उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं है। फर्स्ट आता है क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, तो ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस। तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरे 10 क्वेश्चंस रीड करके बता दिए हैं। उसके अनुसार आप खुद ये तय कर सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट को कितने मार्क्स मिल सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये पूरा जो आपका पेपर है या आपकी एग्जाम है ये 40 मार्क्स की है, और आपको एटलीस्ट पास होने के लिए 15 मार्क्स को भी मिनिमम स्कोर आपको करना ही होगा। तो दिस इज एवरीथिंग इज स्कोर बेस्ड। आपने जितना जितना काम किया है अपने कॉलेज में या अपने इंस्टीट्यूट में, सीधे सीधे आपको उतने उतने मार्क्स मिल पाएंगे। Now next we come to the qualitative questions। ये qualitative questions भी आपको 10 questions है, और इन 10 questions को आपको करीब मिनिमम 100 वर्ड्स में आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको आपको लिखना है। यू हैव टू ऑल्सो सपोर्ट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप ऐसे ही कुछ भी लिखना है करके लिख दिए, वो फैसिलिटी आपने आपके कॉलेज में प्रोवाइड नहीं है फिर भी आपने लिख दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। कोई से भी फेक डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं बनाने हैं। जो कुछ आपके कॉलेज ने लिया है या किया है बस आपको वही सारी चीजों को यहाँ पर फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप क्वालिटेटिव क्वेश्चन का देखते हैं तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉलेज है उसको ये यहाँ पर वो हर एक क्वेश्चन के लिए वो 2 मार्क्स आपको देंगे, और उस तरह से आप खुद भी देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स इसमें मिल सकेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, how the college assesses the learning level of the students after admission and organizes special programs to cater the differential needs of the students। कॉलेज में एक बार स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया, उसके बाद बस आपने उनको थोड़ा बहुत पढ़ा दिया और उसके बाद में वो वहां से चले गए, ऐसा नहीं है। आपने आपके जो पुअर बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, जो थोड़े पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, उनके लिए आपने कौन से ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स लिए हैं। आपने उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे कुछ रेमेडियल ब्रिज कोर्सेज आपने अपने कॉलेज में इंस्टीट्यूट में फॉलो किया है क्या? इफ यू हैव फॉलोड तो यू हैव टू राइट अबाउट 100 वर्ड, मिनिमम 100 वर्ड्स में आपको ये पूरा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स। स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड कौन कौन से हैं? जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, क्या आपके कॉलेज में ये सारी चीजें आप ले रहे हैं क्या? पार्टिसिपेटिव लर्निंग हो रही है क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजीज आप ले रहे हैं क्या? और ताकि आपके जो स्टूडेंट्स हैं they could get to enhance their learning experience, उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो किसी तरह से बढ़ पाए, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जैसे कि आपने फील्ड ट्रिप्स लिए है क्या? कोई आर्ट प्रोजेक्ट आप दे सकते हो अपने स्टूडेंट्स को, इंटरएक्टिव वे ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी आप ले सकते हो, इंटर्नशिप्स ले सकते हो, कुछ केस स्टडीज उनको दे सकते हो, और इंडस्ट्री इंटरफेस आप उनको दे सकते हो। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग के तहत अगर आप उनको प्रोवाइड करते हैं या आपने किया है तो आपको 100 वर्ड्स में विद डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अपलोड इट। थर्ड क्वेश्चन जो आपका रहेगा दैट विल बी द आईसीटी एनेबल्ड टूल्स। आप कौन कौन से आईसीटी एनेबल्ड टूल्स आप अपने कॉलेज में, ऑनलाइन रिसोर्सेज आप कौन कौन से ले रहे हो ताकि आप बच्चों को इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से जोड़ रहे हो। मतलब आपके टीचर्स कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव प्रोसेसेस या ऑनलाइन चीजों से जुड़े हुए हैं। आपके पास में प्रोजेक्टर से आप स्टडी करा रहे हो क्या? आप पीपीटी दे रहे हो क्या? पेन ड्राइव यूज कर रहे हो क्या? आप डीवीडी सीडी ये सब चीजों का इस्तेमाल करके आप किस तरह से बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग उपलब्ध करा रहे हो, इसके ऊपर आपको 100 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अगर आप इसमें खरे उतरते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस बराबर है, तो बिल्कुल आपको इसमें 2 मार्क्स आसानी से मिलेंगे। अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। ऐसा करते करते अपने पास 10 क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन में यू हैव टू मेंशन द एक्सटेंशन एक्टिविटीज।
तो एक्सटेंशन एक्टिविटीज कौन कौन सी है जो आपने नेबरहुड कम्युनिटी के साथ में, मतलब स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करने के लिए कुछ सोशल इश्यूज के साथ आपने उनको जोड़ा है क्या, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए आपने क्या क्या चीजें ली है। जैसे आपके पास एनएसएस होता है, एनएसएस में आपने ब्लड डोनेशन कैंप, या फिर आपने ट्री प्लांटेशन, बोन डेंसिटी कैंप, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो आपके कॉलेज लेते रहते हैं समय के अनुसार, है ना। तो इन सारी चीजों को आपको इनकॉर्पोरेट करना है। आप अगर अपने कॉलेज में सेलिब्रेशन ऑफ पर्सनालिटीज कर रहे हो, उनका हर ये जो बड़े महान जो लोग हैं इनके कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हो, तो ये सारी चीजें, कुछ किसी तरह की कम्युनिटी सर्विसेज कर रहे हो, तो इसके बारे में आपको इस एक्सटेंशन एक्टिविटीज में 100 वर्ड्स में आपको पूरा का पूरा लेखा जोखा देना है विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और आपको 5th नंबर पे आपको टीचिंग लर्निंग कौन कौन से फैसिलिटीज है, जैसे आपके क्लासरूम्स होते हैं, कौन कौन सी लेबोरेटरीज है, अगर साइंस का आपका कॉलेज है तो उसमें लेबोरेटरीज होंगी, अगर पीसीए एमसीए है तो लैब्स रहेंगे, फैशन डिजाइनिंग है तो आपको लैबोरेटरी की जरूरत होगी, अगर कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स है आपके पास कौन कौन से, कल्चरल एक्टिविटीज है, योगा में आप क्या क्या सिखा रहे हैं, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, इन सारी चीजों के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर बतानी होगी। और आपको उसके बाद में ये भी बताना है कि आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज कैसे कैसे, कौन कौन सी लाइब्रेरी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से आपके पास ऑनलाइन या सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने स्टूडेंट्स का जो नॉलेज है वो बढ़ा रहे हो। तो अगर ये 6 नंबर का आप 100 वर्ड्स पे अच्छे से लिखकर उनको दे सकते हैं, तो नेचुरली दे आर गोइंग टू बी, दे विल अकॉर्ड यू
and the evaluation process of PAC with your informative deliberation. It could indeed boost confidence amongst us to face the process of provisional accreditation and would definitely help out to facilitate all the institutions with courage and confidence to go to the process of PAC henceforth. Thank you very much, madam, once again. Dear participants, if you have any queries or questions, please do unmute yourself and ask. The forum is open for you for interactive session. Yes. Sanjay Hello, ma'am. Fulgere, sir. हाँ मैम, हाँ. अभी जो मैनुअल निकला है मैम, उसमें Yes. 50 मार्क्स का है अभी स्कोर। हाँ, सॉरी, वो 50 मार्क्स का नहीं, 40 का है। नहीं 50 का है मैम। 20 क्वेश्चंस। नहीं 50 क्वालिटेटिव क्वेश्चन 10 है और 10 है और 10 क्वेश्चन है और क्वालिटेटिव 15 क्वेश्चन है ना, 10 ही क्वेश्चंस है। हाँ जी। हेलो मैडम, हेलो। क्वांटिटेटिव में फुलझले सर, थोड़ा वेळ थांबा ना। ओके, अच्छा। यस। मैडम, अभी जो नया आया है ना, नैक के वेबसाइट पर अभी जो अपलोड किए हैं, हाँ। अच्छा, अभी उसमें टोटल 25 क्वेश्चन है मैडम। ओके। सो 5 और क्वेश्चंस होंगे जो क्वालिटेटिव के हैं, दैट यू कैन टेक फॉरवर्ड, है ना? बराबर। विजय फुलझले सर। हाँ, वही पूछने का था मैम। हाँ, ये नया फॉर्मेट आया हुआ है। एग्जैक्टली, यस। हाँ, नया फॉर्मेट आया हुआ है। हाँ, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको चेंज करते ही जा रहे हैं ना। दे आर कीप ऑन, दे आर अपडेटिंग इट, एंड इवन द ऑनलाइन प्रोफार्मा इज नॉट येट गिवन। अभी उन्होंने दिया हुआ नहीं है। और ये जो प्रोफार्मा है, मैंने जब बात की उनसे तो उन्होंने कहा है कि अबाउट 15 to 20 डेज उनको लगेगा, और ये ऑनलाइन जब नैक पोर्टल में आएगा 15 to 20 डेज के बाद, तो तब आप आसानी से आप भर सकेंगे। क्योंकि नैक इतना बड़ा चीज है ना, तो उसको करने से अच्छा है कि आप पैक कर लीजिए, पीएससी कर लीजिए, और पीएससी करने के बाद आपको एटलीस्ट मतलब 2 साल की तो आपको राहत मिलती है। अगर आप सेकेंड दोबारा करने लगते हैं तो आपको मतलब 4 साल का मिल जाएगा। तब तक आप फिर नैक फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके मैम, ओके। है ना? और कोई क्वेश्चंस है? Madam, there is a question. Yeah. Sanjay Fulgere, sir, anything else? Okay. So, madam, there is hello, a question. Hi, yes. Ma'am, is this IQAS similar with No. This IQAS is the same. That is a system. So why then this? So what is the difference between this IQAS and IQAC? No. IQAC, that is all we follow, isn't it? For our regular NAC. So it is similar. That is only a system. That under that system we will have our IQAC. Okay, ma'am. Okay, yeah. So okay, the same questions, the same type of questions that we face for IQAC, that you have to register for your institutes also. The same quality sustenance measures that you have to take. Okay. Madam, there is a question. There is a question coming from Ajay Murkute, sir. Okay. He asks, which information in academic year of our college we need to fill in? Right, very good question. Yes. This is a very good question. And you have to give for example, if you want to apply for 22, if you want to apply in the year 22, so you have to give for 21, 22, 1 year data you have to furnish. For in NAC, we give 4 to 5 years are there, isn't it? But in PSC, you have to furnish single current year's information we have to get. Yes. Okay, last year. Yes, last year. Okay. Whichever you want to take. That means if you want to take for 22, so you'll have to give the present year, na? So 21, 22. Yeah. Yes. Okay. That you have to give. This is only for 1 year. That is why I said it is such a great boon. You don't have to furnish 5 years data for this. Only 1 year data is sufficient. And more such instruction would keep on coming. Now this is just in an elementary state, isn't it? They have not just, there are many things that are more to be added.
when it is in preliminary stage, we should go for it. Otherwise, then again, it will become, day by day, it will become complicated. I know for sure. Okay. Thank you. Okay. Yes. Any questions coming from the participants? The forum is open for you. Dr. Makarand Chaure, sir. Any questions, sir? Please unmute yourself. Dr. Makarand Chaure, sir. मॅडम जी तुम्ही माहिती सांगितली खूप माहिती चांगली माहिती सांगितली आणि आमचे ज्यांचे नाक नाही झालेला आमच्या तर आम्हाला तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये सांगितले आणि माझी एक विनंती आहे की जे तुम्ही जे कंटेंट सांगितले आम्हाला जे 20 कंटेंट अगोदरचे आणि 10 आणि ते 10 यांची थोडंसं पीपीटी मिळेल तर बरं होईल. So, a cluster of colleges can make a plus college also, and in that case, you can help. The entire format is available in NAC website. If you go and open PAC, the entire thing that I have told you is already available there. Okay, madam. I think I hope all the questions the queries have been. Hello. Yeah. Hello. Madam, peer team will be visited or not? It is not confirmed yet. I mean, it's up to them. Yes. So it is up to them. If first of all they have said that it will be online. That means because they are going to charge only 10,000 rupees to you, plus GST or plus logistic. Okay. No, so it is up to them. If they want, they will send a peer team. Otherwise, if they are satisfied with whatever data you have furnished or provided, they will not send a peer team. They will just take it online. So we can't pay then logistic fees then. No. Before their confirmation. We don't have to pay. No. Only 10,000 and GST. Yeah. GST. Yes. Okay. Thank you. Thanks. Thank you, madam, for satisfying the queries of all the participants. So now I propose here the vote of thanks. I deem it a great honor to propose the formal vote of thanks for today's orientation program. On behalf of the organizing team of MANOHARRAO KAMDI MAHAVIDYALAYA, I do extend my heartfelt thanks to Dr. USHA SAKURE Madam to enlighten us with her invaluable words of wisdom. With immense exultation, I express my deep sense of gratitude to all the organizing team of this orientation program for their constant support and encouragement in all our efforts. My profound thanks to all our dear participants for your involvement and willingness to take the initiative to participate in this orientation program with a great zeal. There is a short announcement that all the participants are requested to fill in the feedback form which has been recently forwarded in the WhatsApp group to get your active and favorable responses. Then we will continue further. I hope this journey will go on, and with the permission of the chair, I do declare that the program is over. Thank you very much. Thank you once again, ma'am. Thank you.